Hi. So very good evening. So it will be a very brief topic. Like I will talk for around 3 to 4 minutes only. So basically I am today going to discuss about the PUV, like what will be the renal outcome in a developing fetus when there is a chances of having PUV. So the renal outcome depends upon whether the developing fetus, like what is the kind of obstruction and the genetic susceptibility. अब जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी से मतलब है कि वो जीन जो कि उसके नेफ्रॉन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. सो द जीन्स अफेक्टिंग द नेफ्रॉन डेवलपमेंट, जीन्स दोज आर कंट्रोलिंग फाइब्रोसिस, जीन्स दोज आर इन्फ्लुएंसिंग रिपेयर आफ्टर इंजरी. सो दीज आर द थ्री थिंग्स. हाँ, देन लेवल 2 स्कैन जब हुआ बच्चे का, दैट इज़ अराउंड 19 टू 20 वीक्स पे, तो नॉर्मल ब्लैडर और नॉर्मल किडनीज पता लग गई. लेकिन जो उसके बाद थर्ड स्कैन होता है, इट इज़ यूजुअली अराउंड एट द बिगिनिंग और समवेयर एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर और प्रायर टू लेबर. सो व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रोग्रेशन, हाउ थिंग्स चेंज, ये तो कभी पता नहीं लग पाया. सो इरिवर्सिबल चेंजेस बाय द टाइम करंट इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिटेक्ट्स इट्स, देयर इज ऑलरेडी a lot of damage has been done, and we will talk about those irreversible changes, like what are those irreversible changes. So if we say, like in a male fetus, if there is a thick wall bladder and a bilateral hydrouretronephrosis, then one should think about PUV. But these kind of changes can be seen in Prune Valley syndrome also, although that is very rare. But the obstructive uropathy, that is having an impact on the renal parenchyma, that we are going to assess, and we have ultrasound markers for it. And also we have to be aware about amniotic fluid volume, like because oligohydramnios is a ominous sign for advanced and severe obstruction. So there are three things. One is bilateral hydrouretronephrosis, then bladder wall thickening, then oligohydramnios. So three things which sort of indicate that the things are in the favor of obstructive uropathy. But and then on the basis of this, people have identified or thought of doing a fetal intervention, which can be in the form of vesicoamniotic stenting or a fetal valve ablation. But it was found that the pulmonary function improved after doing secondary to vesicoamniotic stenting, but the renal outcomes more or less were the same. Although with fetoscopic valve ablation, it was found that it has changed outcomes in both the ways, which include pulmonary as well as urinary outcomes. So the question now here arises, how to do stratification of the at risk group. वो fetus जो कि at risk है, उसका कैसे पता लगाया जाए, so that even if we are going to do fetal intervention, that will be useful. So normal अगर बात की जाए, normally under ordinary condition the fetal urine is hypotonic because of tubular immaturity, and if there is a severe obstructive uropathy and renal dysplasia, now it will convert into a isotonic urine. So the kidney damage has basically two components. One is functional injury, another one is structural injury. So the functional injury that you can detect with the help of fetal urine में बायोमार्कर्स चेक करके या फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करके. जैसे नॉर्मल बोला जाता है कि सोडियम, जब वो हाइपोटोनिक यूरिन है तो सोडियम क्लोराइड दोनों ही कम है. ऑस्मोलैलिटी ऑल्सो इट इज़ लाइक लेस देन 210, दैट हैव आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ऑल दोज थ्री वैल्यूज़. हाँ, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इंजरी होती है, जो नेफ्रॉन लॉस हुआ है, जो रीनल डिस्प्लेसिया हुआ है, जो फाइब्रोसिस हुआ है, जो एबनॉर्मल नेफ्रोजेनेसिस है, सो this biochemical markers have a high specificity for identifying severe disease, but a limited ability to predict a good outcome. मतलब आज अगर यूरिन की वैल्यू सही है, कल इसमें क्या चेंज होता है. जैसे हमने अल्ट्रासाउंड की बात करी थी, हमने लेवल 2 पे बात करी, फिर हम तीसरा अल्ट्रासाउंड तब करने जा रहे हैं. इस बीच क्या होता है, वी कैन नॉट से. सो यू हैव टू लुक ऑल दोज थिंग्स इन ए like with together, like fetal urinary biochemistry, ultrasound findings क्या है, amniotic fluid volume क्या है, gestational age क्या है, and overall clinical context क्या है. So if you talk about fetal USG is not able to detect early nephron loss, कब हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ,
एंड व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोपिक इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, उसके बारे में नहीं बता सकता। अर्ली ट्यूबुलर अट्रॉफी कब हुई, नहीं बता सकता। माइल्ड एंड इवॉल्विंग रीनल डिस्प्लेसिया, नहीं बता सकता। एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ फंक्शनिंग नेफ्रॉन, दैट इज टोटल नेफ्रॉन एंडोमेंट क्या है वो नहीं बता सकता। एंड ऑल्सो द पोटेंशियल जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो दीज आर द थिंग्स विच अ फीटल यूएसजी कैन नॉट प्रेडिक्ट. That's why need a good marker which can predict the injury. So people have tried doing a like 3-day fetal urine, that also is not able to. फिर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आया, उसमें उन्होंने बोला कि ये फिल्टर नहीं कर पाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर फिल्टर हो गया है और आपको यूरिन में मिल रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ शोइंग दैट द यूर concern that it is coming, that means your damage is already has been done. लेकिन इसके भी ऊपर हमें अलग मार्कर चाहिए which can identify those injury which was already done before this PUV has been diagnosed. Thank you so much for a patient